हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हाल ही में मिस्टर रामदेव अग्रवाल, जो कि को फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ मोतीलाल ओसवाल है, उन्होंने ये स्टेटमेंट बनाया कि उनको स्टिल लगता है कि सेंसेक्स बाय 2032 हिट करेगा टारगेट ऑफ 2 lakhs, which is almost 4 times the current figure. So right now Sensex is at 60,000 and he's talking about a number of 2 lakhs, जो कि करीबन 4 times करंट नंबर के है। सो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इज इट रियली अचीवेबल और इज इट मोर ऑफ अ फार फेच्ड ड्रीम। Before we proceed any further, a small request. I would request you all, if in case you haven't subscribed to my channel, please go ahead and subscribe. At the same point in time, please add your comment as part of this video. अगर आपको इस तरह के कंटेंट अच्छे लग रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं इस तरह के और वीडियो बनाऊं, या फिर आपके पास कोई टॉपिक या सब्जेक्ट है जिस पे आप चाहते हैं मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप वो अपने कमेंट सेक्शन में ऐड करें और मैं ज़रूर से कोशिश करूंगा कि मैं इस पे जो भी जानकारी दे सकूं, आई विल ट्राई एंड डू इट। मिस्टर रामदेव अग्रवाल ने अपने इंटरव्यू में इस नंबर को जस्टिफाई करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि आने वाले कुछ समय तक इंडिया 6 to 7% के रेट पे ही ग्रो करेगा। और ये मानते हुए हम चलते हैं, क्योंकि ग्रोथ रेट 6 to 7% के रेंज में रहेगा, दिस मीन्स कि हमारा नॉमिनल जीडीपी जो है नीड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 12 to 12.5%। नाउ directly or indirectly, if a nominal GDP has to grow by 12 to 12.5%, the corporate or the companies in India will have to grow their earnings at a rate of around 15%. Right. So, as the Sensex or Nifty is slave to corporate earnings, उनका कहना है, this means कि अगर कंपनियां 15% पे ग्रो करती हैं उनके अर्निंग्स को, तो ऑब्वियसली सेंसेक्स और निफ्टी भी 15% से ग्रो करेगा। तो आइए एक बार इस नंबर्स को देखते हैं कि अगर निफ्टी और सेंसेक्स 15% पे ग्रो करता है, तो आने वाले 10 साल में क्या स्टिल हम 2 लाख का नंबर रीच कर सकते हैं कि नहीं। तो मिस्टर रामदेव अग्रवाल ने ये पहले प्रेडिक्शन किया था इन द ईयर 2022, व्हेन सेंसेक्स वाज अराउंड 50,000। तो एट दैट पॉइंट इन टाइम उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि हर साल अगर 15% से ग्रो होता है, तो बाय एंड ऑफ 10 years, विच इज स्टार्ट ऑफ नियर अबाउट 2032, सेंसेक्स 2 लाख तक पहुंचना चाहिए। तो अगर आप देखोगे लास्ट ईयर से भी, तो बाय एंड ऑफ लास्ट ईयर, विच इज द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर, द सेंसेक्स शुड बी अराउंड 57,500। सेंसेक्स ऑलरेडी अभी around 60,000 61,000 है, सो बिट बेटर कंपेयर टू व्हाट इट शुड बी। बट अगर हम ये नंबर को भी मान के आगे प्रोसीड करते हैं, तो आप देखोगे कि इस साल expecting a growth of 15%, we should be closing by a number of 66,000, right? Again, let's take the same number for every year, and what I have done is कि हर साल में उस नंबर को स्टार्ट में सेट करते हुए उसमें 15% ग्रोथ दिखा के बाय एंड ऑफ दैट ईयर हाउ मच शुड बी द नंबर इज व्हाट आई हैव रिफ्लेक्टेड। तो अगर आप देखोगे विद दिस नंबर बाय द एंड ऑफ 10th ईयर, विच इज ईयर 2031, स्टार्ट ऑफ ईयर 2032, सेंसेक्स डेफिनेटली लुक्स टू अचीव द नंबर ऑफ 2 lakh, right? So to the number from a Excel perspective looks like 2,02,278. So this number is pretty much achievable. Now हम थोड़ा pessimistic approach भी अगर consider करें कि because of the current Russia-Ukraine situation or the US recession that people are talking about, or the slowdown in China economy, ये सारे ग्लोबल फैक्टर्स हमें इम्पैक्ट करते हैं और हम इस ग्रोथ रेट को मेंटेन नहीं कर पाते, और हम मान के चलते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट कुछ सालों के लिए पेसिमिस्टिक नंबर विच इज़ 12% ग्रोथ अचीव करेंगे, जहाँ पे हमारा ईयर ऑन ईयर जीडीपी ग्रोथ रेट करीबन 5.5% रहेगा। नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करते हुए अराउंड 10-11% रहेगा, और कॉर्पोरेट अर्निंग अकॉर्डिंगली नियर अबाउट 12% पे ग्रो करनी चाहिए। तो अगर हम इस नंबर को भी कंसिडर करते हैं, तो बाय स्टार्ट ऑफ 2023 at the rate of 60,000 with a growth of 12%, the Sensex this year should be able to close by 67,200। अगर हम इसी नंबर को कंटिन्यू करते हैं फॉर द नेक्स्ट 11 years, दैट इज फ्रॉम 2023 to 2033,
we can easily achieve a target of 2 lakhs. That is by having a growth rate of 12% and having our investment for the next 11 years, we still will be able to achieve the Sensex target of 2 lakh, as the number is reflecting as 2 lakh 8,713. So looking at the Excel sheet, the number of 2 lakh looks realistic. But now other than numbers, let's also talk about other factors जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि if we are moving in the right direction and क्या ये growth rate continue होना possible है. So first talking about the our economic advisory council के chairman, जिन्होंने लेटली एक स्टेटमेंट बनाया है जो उन्होंने कहा है कि इंडिया बाय 2047 can become a developed country or a developed nation. Now, what is the definition of a developed nation? अगर इंडिया को एक developed nation या developed country बनना है तो हमारी इकोनॉमी एटलीस्ट $20 ट्रिलियन की होनी चाहिए फ्रॉम करंट 3.7, राइट. इस नंबर से अगर हमें $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है बाय 2047, this means the economy has to grow at a rate of 7 to 7.5%. नाउ अगर इकोनॉमी 7 to 7.5% ग्रो होती है, सो जैसा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, नॉमिनल जीडीपी ऑटोमेटिकली विल हैव टू ग्रो बाय एटलीस्ट 12 to 13% एंड द कॉर्पोरेट अर्निंग हैज टू ग्रो बाय नियर अबाउट 14, 15 और 16%. तो दिस नंबर अगेन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव लुक्स अचीवेबल. नाउ अनदर फैक्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इज आवर पॉपुलेशन. सो आज के डेट में हमारी इंडिया की पॉपुलेशन अराउंड 130 बिलियन है. नाउ विद दिस नंबर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि द ग्रोथ रेट विल नॉट बी डीरेल्ड. हमारा ग्रोथ रेट इसी रेट पे ग्रो होना चाहिए बिकॉज हमारा इंटरनल कंजम्पशन ही बहुत हाई है. वी आर नॉट वेरी मच डिपेंडेंट ऑन अदर इकोनॉमी for our growth. So with the current population, it also helps in achieving this number. So the growth rate can continue at this pace. At the same point in time, लोगों का spending power बहुत पहले से बढ़ गया है. People are spending a lot. Government का focus बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है towards make in India and with initiatives like GST collection and all. At the same point in time, government, I believe, is trying their best in order to ensure कि वो सारे areas में जहाँ पे भी support दे सके economic system को growth के लिए, they are trying to provide it, right? So in all these probability, looking at the new initiatives that are happening, the spending power of our Indian economy population, at the same point in time, the way the companies are turning out to be efficient, this all directs to the fact कि yes, हमारे लिए आने वाले कुछ सालों तक 7 to 7.5% का growth rate maintain करना easy रहेगा. Now, together with that, the last thing that I want to show you is about our confidence in terms of our stock market. People focus towards stock market. Lately what we have seen is कि Indian investors अब stock market में काफ़ी invest करते हैं, either directly or through mutual funds. एक बार इस नंबर पे नज़र डालते हैं. Now if you look at this chart for the last 12 years, starting 2010, for the first 4-5 years, one can easily see कि इंडियन इन्वेस्टर का अपने इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस काफ़ी नेगेटिव था. दे वर नेट सेलर, so they were selling to the tune of 20,000 crore, barring year 2011. For the next 3 years as well, they have been net seller in the Indian stock market. So minus 55,000 crores, 72,000 crore outflow, and then 29,000 odd crore outflow from the market. But starting 2015, the confidence of Indian investor into their market have grown tremendously. There are many reasons that can be attributed to it. उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं, उस पर हम बात कर सकते हैं. बट फॉर नाउ इफ़ वी जस्ट फोकस ऑन दिस नंबर्स, स्टार्टिंग 2015 इंडियन इन्वेस्टर्स ने ईदर थ्रू डायरेक्ट
or indirect channel, that is directly by investing into Indian stock market or through mutual funds, they have invested heavily into Sensex and Nifty, right? In year 2015, the number has been 65,000 crore, then 40,000 crore, and if you look at year 2018, the Indian investor have invested a total net flow of positive flow of around 1 lakh crore into the Indian stock market. Now, barring year 2020, when it was a Corona pandemic year, when there was a net outflow from the market because it was kind of a panic selling, तो वहाँ पे it was net negative of to the tune of 46,000 crore. But again, if you look at the next 2 years, which is 2021 and 2022, the number has been tremendously positive. In 2021, it has grown by 1 lakh crore, and then the next year it is like 2.35 lakh crore. So that's the kind of investment the Indian investor have done into the Indian equity market. Now, if we have to see this with the help of a graph, again, it's showcase the same number, and one can easily see that barring year 2020, starting 2015, the Sensex has been continuously in positive trajectory. So I think all these indicators pretty much यही हमें बताते हैं कि there is a high probability कि Indian economy should continue growing at a rate of 7 to 8% for the next 10 to 15 years. Plus Indian stock market हर साल almost 15% का growth rate generate करना चाहिए until and unless there is some kind of global instability, or there is instability within the nation in terms of the political situation, or if in case there is some kind of war, God forbids. But अगर ये सारी situation नहीं आती है, then I believe we definitely should continue growing at a rate of 15% for the next 10 to 15 years. Now, before we finish this video, एक small Excel sheet जहाँ पे the power of compounding I want to show कि अगर आप continue करते हैं आज से हर महीने 20,000 रुपया Indian stock market में डालना through a passive mechanism which is through a mutual fund, then what the numbers looks like. Now, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, by making a small monthly investment of rupees 20,000 per month, and you continue investing that amount for next 10 years, and based on the theory that we discussed right now, that the Indian stock market will continue growing at a rate of 15%, we easily will be able to build a corpus of 55 lakh 73,000. So that's like almost 32 lakh rupees return on your investment of 24 lakhs over a period of next 10 years. So that's the power of compounding. Now, this doesn't mean that we should go ahead, sell everything and invest all our money into the Indian stock market. It's just that there are other possibilities. It's just a hypothetical number towards which we are working, and that's the reason I'm saying कि आप एक small money भी अगर आज से हर महीने Indian stock market through mutual fund invest करना शुरू करते हो, then over the next 10 years of time frame, you can easily see a good return from the Indian stock market. With that, I ends today's video. I hope you liked it. आप प्लीज़ अपने कमेंट मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ मुझे ये भी बताइए अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं या कोई ऐसा टॉपिक है जो आप मुझे कवर करना देना चाहते हैं. With that, thank you and have a nice day.